to Unit 3, lecture number 4. We will continue the intermediate code representation. So, address and instruction, we will talk about addresses and instructions because while writing the 3 address code, there it is very important. In 3 address code, we will use two concepts, addresses and instructions. These two things are very important. In object oriented term, these concepts corresponds to the classes and various kinds of addresses and instructions corresponds to subclasses. Alternatively, 3 address code can be implemented using the records with fields, records called quadruples and triples. An address can be one of the following. First, it can be name, it can be constant, it can be compiler generated temporary something, and the list of the common 3 address instruction forms are following. First, list of 3 address instruction. 3 address instruction is following form. There can be assignment operator can be x, assignment operator y, operator z, and it can be arithmetic operation, logic operation, x, y, z. There can be assignment operator can be x, assignment operator, operator y. Op is here unary operator. It can be unary operator. Next, copy instruction, that can be x, assignment operator y. Just we are copying the value. Next, we have unconditional jump, go to L. Unconditional jump, which means that we want to jump to a certain location L and we don't have any kind of condition here. Next, there can be the conditional jump. If a condition is true, then go to L. Next, we have conditional jump. If x, then relational operator y. If x, relational operator y, go to L. So this relational operator can be less than, equal to, greater than or equal to, etc. Next, we have procedure call. We can create a function and we can call the function, and function can have a certain parameter. We can represent parameter by using the param keyword, param x. For all parameter, call p comma n and y equal to call p comma n. What it will do, it will just return, it will call the function with the n number of parameter. So if we can write the procedure like this: p in parenthesis x1 x2 dot 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 xn. Now here you can see how we call it: param x1 param x2 dot 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 param xn. These are the number of parameters. In this way we can define or declare the parameter, and then we should call p comma n. P is the name of the function, n is the number of parameter which we want to call. So in this way we can call a certain function. Index copy instruction very easy. It's like the array, as you know, x equal to y square bracket I. Next, we have address and pointers assignment. X, assignment operator by, you know that the address of y is assigned to x. X equal to asterisk y. It means that the value at y is stored in x, and we can write asterisk x equal to y. It means that the value of y is stored at the location x. So let us take one example, and let consider the statement: do I equal to I plus 1 while I while a square bracket I is less than v. So now we need to translate into 3 address code statement. The solution is like this. Here we have two varieties: symbolic symbols and positional symbols. The two way of assigning the labels, here the 3 statement. What we have done: t1 equal to I plus 1, I have written here, and I equal to t1, and I into 8. I into 8 indicate 8 is the size of one element, that is the location t2, and a square bracket t2, that is at that particular location the value is assigned at, stored in t3. And if t3 is less than v, which is this v is here, you can see this v is here, and t3 is now ai, and go to L. So in this way we can have the loop here. Or the same thing can be written with 101 102 103 100 101 102 103 104, like this. So it can be constant or it can be the numerical value, you can see here. Next we have, there are two, yeah. So this is the just description of the above solution statements that I have already discussed. Let's come to the quadruple. So in case of quadruple, the description of 3 address instruction specifies the component of each type of instruction, but it does not specify the representative of these instructions in the data structure. In a compiler, these instructions can be implemented by using the objects or records with the fields with the operator and operands. Three such type of representation is quadruple, triple, indirect triple. There are three types of things: quadruple, triples, and indirect triples. Let us discuss about the quadruples. The quadruple has 4 fields: operator, argument 1, argument 2, and result. So what is op? Op contains the integral code of the operator, and 3 address instruction has x, assignment operator y plus z is represented by placing plus
अगर हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो प्लस को प्लेस करना होगा ओपी की जगह, y को प्लेस करना होगा ए आर जी वन की तरह एंड z को प्लेस करना होगा ए आर जी टू की तरह और x को रिप्लेस करना होगा रिजल्ट की तरफ। तो फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द फर्स्ट इज दैट द इंस्ट्रक्शंस लाइक यूनरी ऑपरेटर x इक्वल टू माइनस वाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस केस में एक, या फिर x असाइनमेंट ऑपरेटर y की अगर बात करेंगे, सो वी डू नॉट यूज इन दिस केस आर्ग्यूमेंट टू। फॉर द कॉपी स्टेटमेंट x असाइनमेंट ऑपरेटर y अगर लिखते हैं तो op is simply assignment operator, while for the first other operation assignment operator is implied। तो इस तरीके से बाकी की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेटर लाइक परम, अगर परम को यूज़ करेंगे तो वी डू नॉट यूज़ द आर्ग्यूमेंट टू और ना ही रिजल्ट यूज़ करेंगे बिकॉज पैरामीटर इज कॉल्ड। थर्ड इज द कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट पुट द टारगेट लेवल इन द रिजल्ट, सिंपली रिजल्ट को प्लेस यहाँ पर करता है। तो दीज आर द बेसिक एक्सेप्शंस। So let us consider one example. Here we have a assignment operator b multiplied by minus c plus b multiplied by minus c को हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने थ्री एड्रेस कोड में लिखा है और क्वाड्रपल के फॉर्म में लिखा है। थ्री एड्रेस कोड में कैसे लिखेंगे, इसके अंदर लिख दिया टी वन इक्वल टू माइनस सी एंड टी वन मल्टीप्लाइड बाई बी इज टी टू एंड माइनस सी यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस सी को हमने यहाँ पर रख लिया है यहाँ पर, और बी मल्टीप्लाइड बाई बी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, टी टू प्लस टी फोर इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पर आ गया ए इक्वल टू टी फोर। और इसी चीज़ को आप क्वाड्रपल में लिखेंगे तो इस तरीके लिखेंगे, क्वाड्रपल के अंदर चार कॉलम होगा, एक ओपी, एक आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू एंड और रिजल्ट। सो ओपी में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर माइनस सी, और माइनस सी को हमने कहाँ स्टोर कर लिया, टी वन के अंदर स्टोर कर लिया। मल्टीप्लीकेशन बी टी टी टू, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक तरीके से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बी टी वन और टी टू, सॉरी बी इंटू टी वन को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट को टी टू के अंदर स्टोर किया, क्योंकि रिजल्ट वाला कॉलम हमारा है पर ये वाला कॉलम है। सिमिलरली माइनस सी के अंदर टी थ्री के अंदर स्टोर कर लिया। इस तरीके से फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा ए के अंदर आ गया यहाँ पर। सो इन दिस वे वी कैन राइट द क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन। Let us consider about triple. So in case of triple there are only three field which we call op argument 1 and argument 2। we saw the result field, और result field को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर देंगे और result field को हम लोग दूसरी तरीके से इंडिकेट करेंगे। we will see one example here। सो द सेम एग्जाम्पल को हम देखिए हम लोग कैसे ट्रिपल्स के अंदर यहाँ पर लिख रहे हैं। ओपी आर्ग्यूमेंट वन आर्ग्यूमेंट टू, पहले हमने लिया माइनस सी हमारा जीरो में है तो जीरो को यहाँ पर ले लिया, सो माइनस सी, सो बी माइनस सी इज हियर और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करें, तो बी को मल्टीप्लाई करें माइनस सी के साथ, देन माइनस सी अगेन हमने लिया यहाँ पर, बी को हमने फिर टू से लिया तो माइनस सी से बी को मल्टीप्लाई किया है। फाइनली वन और थ्री को हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिया एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए हियर। द सेम थिंग इज सिंटेक्स ट्री को भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से, माइनस सी लिया, बी को मल्टीप्लाई किया, सी को यहाँ लिया, बी से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया और फाइनली यहाँ पर असाइन कर दिया है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ट्रिपल्स। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट ट्रिपल। सो इनडायरेक्ट ट्रिपल भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पर। सो इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटेन लाइक दिस। सो माइनस सी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आप दे रहे हैं और बी यहाँ पर दो जीरो दे रहे हैं, माइनस सी इज हियर, बी को हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर वन प्लस थ्री जस्ट वी आर एडिंग हियर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर दे रहे हैं ए और यहाँ पर दे रहे हैं फोर। ऑब्वियसली ये दोनों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। सो इन दिस वे हम वी कैन यूज इट एंड here we can have the number of addresses 35 36 37 38 और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक सीक्वेंस यहाँ पर दे रहे हैं। सो विथ इनडायरेक्ट ट्रिपल्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कैन मूव टू द इंस्ट्रक्शन बाय रीऑर्डरिंग द इंस्ट्रक्शन विदाउट इफेक्टिंग द ट्रिपल्स देमसेल्फ। थैंक यू सो मच।